What I want to do on the political stock exchange is take you through some data which gives you a sense of how Jharkhand is shaping up before polling begins, and also we'll speak to some of the players on the ground to get a sense of how confident they are about what may happen on the 23rd. So what I've done is a cross-tab between Maharashtra and Jharkhand to give you a comparative sense of how those same issues stack across these two poll-bound states. So we look at the important issues in this election, and I've got Maharashtra here on the right, I've got Jharkhand on the left. It will give you a very quick comparative sense of which issue matters more in which state. 42% of the respondents in this poll told C voter that unemployment was the number one issue, whereas in Maharashtra it was only 25%. 25% by itself is big, but if 42% in Jharkhand are saying unemployment is a big issue, that shows the severity of the jobs crisis in poll-bound Jharkhand. Road, water, power, roughly the same in both these states, 13 versus 12. Farmer issues, far less important in Jharkhand, only 5% feeling that farmer issues was their most important issue, whereas in Maharashtra, it was almost 4x that. 19% of the respondents felt farmer issues was their big issue. So corruption, not much of a factor in Jharkhand. Remember, the BJP has been talking a lot about corruption by the JMM, but it's not the most important issue for most of the voters. Neither is the most important issue in Maharashtra. Let's come to inflation. Inflation matters to 10% of the voters in Jharkhand as their number one issue, to 16% in Maharashtra as their number one issue. So that's the broad sense. Unemployment, much more a factor in Jharkhand than it is in Maharashtra. That being said, I want to welcome Yashwant Deshmukh of C Voter. Amitabh Tiwari is our in-house cephalogist, has been working with our teams in putting some of these data sets together. So I want to go to Yashwant first. Yashwant, 42% of the respondents in this data in Jharkhand say that unemployment is their number one issue. In Maharashtra too, it's the number one issue, but when you stack those two as a cross-tab, it shows you just how much a bigger challenge jobs is in Jharkhand versus Maharashtra. Of course, and this also tells us that basically in Maharashtra, we have the farmer issue in a much bigger impact. When I'm saying having a day-to-day impact, that is very clear. As far as Jharkhand is concerned, Rahul, I think it's important to understand that Bihar, Jharkhand, West Eastern UP belt, that entire Purab as we club together, has been always sending a big number of migrant labor and migrant worker to other states. And job has been always an issue over there, particularly jobs near home, jobs within the state. When the unemployment is set as an issue, it's also as an issue in terms and in context of that there are not many jobs within their home state. Okay, I want to go now to the second question on the political stock exchange tracker, and this is to do with who is the preferred choice for chief minister. Now, naturally, the incumbent always has a name recall advantage by the very fact that he's been in office for the past 5 years. So Hemant Soren is the number one choice for 40% of the respondents. From the BJP's camp, it's very clear that Babulal Marandi is the number one choice at 26%. The others like Arjun Munda is only 3, Raghubar Das, the former chief minister, is only 6. It's interesting that Champai Soren, who comes from Kolhan, where the BJP is weak, is at 9%. So he's number 3, ahead of Arjun Munda and Raghubar Das. And that would give the BJP some strength that he has some traction in the Kolhan area. Now, how do you read this, Amitabh Tiwari? Babulal Marandi at 26%, Champai Soren at 9%, and the fact that Hemant Soren is the number one choice for 40% of the respondents in this data. Yeah, so normally the incumbent chief ministers do get a better recall when you ask this question. And that is more significant when there is no opposition CM face. So clearly we see that Hemant Soren is at number 1. However, if you add all the CM aspirants from BJP's side, the number is higher than Hemant Soren. It is 44% versus 40%. So that also gives an indication that the combined Adivasi leadership of BJP, including Babulal Marandi, who has still a very good image in Jharkhand, is slightly higher than Hemant Soren. While Hemant Soren continues to be the dominant figure,
BJP has put up a combined leadership and also brought in Champai Soren, who is not only gaining 9%, 10% ratings, but also probably helping in the Kolhan region where the BJP could not win even a single seat in 2019. Okay, I want to welcome two guests right now. Sanjay Seth is the Union Minister of Defence, Member of Parliament from Ranchi from the BJP. We also have Supriyo Bhattacharya, General Secretary, spokesperson of the Jharkhand Mukti Morcha, the JMM. I want to go across to Sanjay Seth first. Sanjay Seth, why do you think the voters of Jharkhand are going to help you come back to power ahead of polling tomorrow? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इस दफा बीजेपी के सत्ता में लौटने की बारी है? डेफिनेटली आप देखो, मैं कह सकता हूं झारखंड पिछले 5 सालों में हेमंत सोरेन की सरकार और कांग्रेस, इन दोनों ने सिर्फ धोखा दिया, सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए, युवाओं को धोखा दिया, महिलाओं को धोखा दिया, किसानों को धोखा दिया। इन्होंने कहा था, मैं अपने पिता शिबू सोरेन की कसम खा के कहता हूं कि 5 लाख लोगों को हर साल नौकरी देंगे, युवाओं को, नहीं तो गद्दी छोड़ देंगे। 5 लोगों को नौकरी नहीं दी और उन्होंने वादा किया था अगर नौकरी नहीं दे पाए तो बेरोजगारी भत्ता 6,000 रुपए देंगे, नहीं तो कुर्सी पे लात मार देंगे। वो भी नहीं किया। महिलाओं को कहा था कि 2-2 हजार रुपए चूल्हा खर्चा देंगे, नहीं दे पाए तो हम वोट मांगने नहीं आएंगे, वो भी नहीं दिया। इन्होंने वायदा किया था 5 साल पहले कि बेटी की शादी में सोने का सिक्का देंगे। सोने का सिक्का तो छोड़ दो, पीतल का भी सिक्का नहीं दिया, लोहे का भी सिक्का नहीं दिया। आम लोग नाराज हैं। नहीं, पर कईयों को यह भी लग रहा है कि जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई हुई, उससे थोड़ी सिंपैथी बनी, उससे लोगों की सहानुभूति बनी और इसी वजह से लोकसभा इलेक्शन में जो 5 ट्राइबल सीट्स थी उसमें बीजेपी की पराजय हुई। और ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या आपके खिलाफ एक ट्राइबल कंसोलिडेशन होगा? संजय जी, नहीं नहीं नहीं, आप देखो, आदिवासी मुख्यमंत्री थे और रूबिका पहाड़िया, एक बेटी के 150 टुकड़े किए गए, न्याय मिला क्या? रूपा तिर्की एक पुलिसकर्मी थी, दुमका में उसकी हत्या हो गई, न्याय मिला क्या? हमारे लोकसभा के अंदर पशु तस्करों ने संध्या टोपो के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर मार दिया, न्याय मिला क्या? नहीं मिला। आप सेना की जमीन लूटोगे, आप आदिवासी की जमीन लूटोगे, आप भ्रष्टाचार करोगे, आपके आलमगीर आलम, माने भ्रष्टाचार का आलम देश ने देखा, कैसे उनके पीएस के यहां 40 करोड़ रुपए नगद बरामद होता है और एक जो लाल डायरी मिली उसमें 500 करोड़ का लेन देन का खाता चिट्ठा बना हुआ है। कैसे लोग विश्वास करेंगे? आपके एक आईएएस ऑफिसर पूजा सिंघल के यहां कितना पैसा बरामद हुआ? 3 साल से जेल में है, लोग विश्वास करेंगे क्या? एक कांग्रेस सांसद के यहां 350 करोड़ रुपया बरामद हुआ। ये कौन सा पैसा था? यही लूट का पैसा था ना। आप लूट करोगे, आप विकास का पैसा लूटोगे, रिश्वत लोगे, सेना की जमीन लूटोगे तो कार्रवाई नहीं होगी क्या? अच्छा, आपका एक बड़ा पोल प्लैंक था इन्फिल्ट्रेशन की, घुसपैठ हो रही है, बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं, उससे डेमोग्राफी बदल रही है। पर जो राज्य सरकार के नुमाइंदे वो कहते हैं कि भाई झारखंड तो बॉर्डर स्टेट है ही नहीं और अगर घुसपैठ हो रही है तो उसको रोकना तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। बिल्कुल राहुल जी, मैं बताता हूं, देश का पहला राज्य झारखंड है जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह आदेश दिया, कोई पशु तस्कर की गाड़ी कोई थाना नहीं रोकेगा, कोई पुलिसकर्मी नहीं रोकेगा। गौ माता झारखंड से बांग्लादेश जाए कटने को, सेफ जोन किसने दिया? झारखंड की सरकार ने दिया ना। हजारों की तादाद में रोजाना गौ माता बांग्लादेश कटने जाती है। अगर कोई हिंदू समाज का, कोई सनातनी रोकता है तो उस पर केस हो जाता है। यही सेफ जोन जो बांग्लादेश के घुसपैठिए, उनको सेफ जोन मिल गया, वो आते हैं और एक वोट बैंक मिल गया इनको। अरे बांग्लादेश से आ रहे हैं, वो आए, उनको आधार कार्ड फेक बन जाता है, वोटर आई कार्ड फेक बन जाता है, आराम से यहां रहते हैं, कोई पुलिस कार्रवाई नहीं करती। मैं तो रांची लोकसभा का सदस्य हूं ना,
रांची में 1 लाख के करीब, मैं ऑथेंटिक बोल रहा हूं, 1 लाख के करीब बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिए घुस के दिन में वो फल फ्रूट बेचते हैं और शाम को लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करते हैं, कहीं स्नैचिंग करते हैं, कहीं चोरी करते हैं, कहीं मर्डर होता है। ये हालात बना दिए हैं। संथाल में 5 जिले पूरी तरह घुसपैठिए, माने आप समझ लो डेमोग्राफी बदल दी। अब तो राजधानी में हालात हैं, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, कौन रोकेगा? क्या 1-1 इंच पे सेना लग जाएगी क्या? ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी जो ट्राइबल इलाके हैं वहां पे कमजोर है, कम से कम लोकसभा इलेक्शंस में तो यही देखा गया। आपको क्यों ये लग रहा है कि जो लोकसभा में हुआ वो फिर से दोहराया नहीं जाएगा असेंबली इलेक्शन में? देखो नैया पार राहुल जी आप समझो, इन्होंने ही 5 साल पहले कहा था कि झारखंड की लाखों महिलाओं को 2-2 हजार रुपया चूल्हा खर्चा देंगे। दिया क्या? जब चुनाव आए, जब हार का डर आया, फ्रस्ट्रेशन आया और लगा कि अब तो कहीं की नहीं है, तो आप एक मैया योजना के नाम से एक आपने शुरू कर दिया, एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने शुरू कर दिए। क्या ये जायज है क्या? और हमने कहा हम गोगो दीदी योजना के तहत हम 2100 रुपया देंगे। हमने तो वादा नहीं किया था 5 साल पहले। 5 साल पहले आप ही ने वादा किया था, आपने दिया नहीं। आपने ही तो वादा किया था बेटी की शादी में हम सोने का सिक्का दे देंगे। अरे सोने का सिक्का तो छोड़ दो राहुल जी, इनसे पूछो लोहे का भी सिक्का दिया क्या? ओके क्यों हार के डर से फिर आपने मैया योजना और एक प्रलोभन, एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने आपने दिखाने शुरू कर दिया आपने? Okay, just stay with me. I want to show how the performance of the state government in Jharkhand compares with the government in Maharashtra. So we took the level of satisfaction with the performance of the government. So how angry are you with the state government? Do you want to change it? It's interesting that in Maharashtra and Jharkhand, both angry and want change is 51%. Not angry, don't want change is 41%. Is that odd, Yashwant Deshmukh, that these are both almost the same? And I also want to show you the next sheet, which again gives you a sense of how the government is doing. This is to do with rate the development work carried out by the state government. Here in Jharkhand, 41% say the development has been good. Maharashtra, 53% say the development has been good. In Jharkhand, 33% say the development work done by the state government has been poor, and in Maharashtra that figure is 23%. So it would seem from the outside that people are more satisfied. Voters in Maharashtra are more satisfied with the work of the local government than voters in Jharkhand. I want to put that question to Yashwant Deshmukh. Yeah, Rahul, it seems like that. And it also seems like that probably the anti-incumbency is likely to be more acute in Jharkhand to a certain extent. That in the different regions of Jharkhand, barring the Santhal Pargana, I think the state government is facing certainly angry numbers in other regions. So Santhal Pargana is fine. Santhal is fine where, that is their core area and there is hardly much of incumbency over there. It also depends on the state level leadership that they will projected. We could not see the region-wise leadership projection, but certainly Champai Soren was significantly bigger number in Kolhan and that area, which is his home turf rather than other state areas. And one thing which I want to point out, Rahul, that this is probably one of those few elections where BJP has actually not given a CM face. Babulal Marandi in all our trackers earlier used to get a significantly higher number. But this time, even though he is number one between them, there is no question about it among the BJP candidates. And as Mita pointed out, overall BJP numbers are higher in terms of leadership than. But I guess that him being not projected as the CM candidate also has something to do with the lesser number on that side. But not many. If it would have been probably declared candidate as a chief ministerial candidate, a lot many number might have been coming across much more polar. Ghulam Ahmad Mir joins us. He's the Congress in charge for Jharkhand. Last time I remember RPN Singh played the same role. He took the party and the alliance to a famous victory. He's now on the side of the BJP. Ghulam Ahmad Mir Saab, welcome. From the data and from interpretation of the data, it seems that there is
a high level of anti-incumbency and quite a strong desire for change amongst voters right before polling begins. राहुल, ये तो फिगर मैंने आपका सुन लिया है, मगर जो हम यहाँ ग्राउंड सिचुएशन देख रहे हैं तो फिलहाल हम लोगों को तो ऐसा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो मैनिफेस्टो जो 2019 में दिया गया था उसके आगे जाकर यहाँ की कोलिशन सरकार ने कुछ ऐसे अच्छे काम किए हैं जिसको लोग सीधा रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, फील कर रहे हैं कि कोई सरकार तो आई है कि जिसने चाहे किसानों के लिए बात रखी या चाहे महिलाओं के लिए सम्मान की बात रखी, वो सीधे इम्पैक्टफुल प्रोग्राम्स है। और जो हम यहाँ कैंपेन में देख रहे हैं तो 50% आबादी तो सीधे ओब्लाइज फील कर रही है आज की हमारी गठबंधन सरकार से, जो उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए हैं। बाकी ओवरऑल डेवलपमेंट 5 साल की जो बात है उसमें नेशनल लेवल पर भी, झारखंड में भी कोविड के भी कहानियां रही है, वो सभी स्टेटों को फेस करना पड़ा। और उसके बाद आप जानते हो कि यहाँ पर पिछले 1-1.5 साल से काफी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की भी बातें रही है, और उसके बावजूद जो यहाँ की लीडरशिप ने, जो यहाँ के मुख्यमंत्री ने इनिशिएटिव्स लिए हैं, और हमें साफ दिखाई दे रहा है कि उसको लोग रेस्पॉन्ड कर रहे हैं एज कंपेयर टू अदर साइड बीजेपी, जो सिर्फ बीजेपी आरोप लगा रही है इन्फिल्ट्रेशन का कि घुसपैठिए आ रहे हैं आपके राज्य में, कैश पकड़ा जा रहा है मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द जो उनके साथी हैं, सपोर्टर्स हैं। तो ये तो बहुत सीरियस चार्ज है जो आपकी सरकार पे लग रहे हैं। वो सुनिए ना, ये स्टेट सरकार पर तो चार्ज आना नहीं चाहिए, क्योंकि देश ने 10 साल पहले ये जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी को दी है कि देश के नागरिकों को सुरक्षित रखना ये उनकी जिम्मेदारी है, देश के बॉर्डर्स को सिक्योर रखना ये उनकी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर तो लोग मजाक कर रहे हैं कि जब बीजेपी ये बात उठा रही है घुसपैठियों की, तो उसका मतलब हमारे बॉर्डर सेफ नहीं है। हमारी जो मरकजी सरकार है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री, दे आर फेल। वो किसी भी तरह से स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये तो एक अनपढ़ आदमी भी, कम पढ़ा लिखा आदमी भी समझ रहा है। जो जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, और वो खुद ही सेंट्रल गवर्नमेंट अपने फेलियर उसको जनता के सामने पेश कर रही है, और 11 साल से वो हुकूमत में है। अगर कोई इस तरह का इन्फिल्ट्रेशन का अटेम्प्ट हुआ है तो वो कहां सोए हुए थे? उन्होंने उस चीज को नंगा क्यों नहीं किया? उनके केसेस क्यों नहीं हुए? वेरिफिकेशन क्यों नहीं हुई? ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। I want to show this data to our viewers, which is to do with which scheme tracks the most. And this is very interesting because when you're watching India Today at this time and somebody tells you that, you know, I'm going to give you 1,000 rupees if you're a woman between 18 and 50, it may not seem like a very big deal. But if you ask voters in Jharkhand which scheme is tracking the most, then the Mukhyamantri Mahiya Samman Yojana, which is for women, their respect, and the scheme by the Chief Minister for this purpose is frankly the only scheme that tracks. 46% think it's a big deal. The Ladki Behan Yojana in Maharashtra had similarly high numbers. Everything else is much lesser. The Savitri Bai Phule Kishori Samriddhi Yojana is 2%. Abua Vas Yojana is 10%. Now, Amitabh Tiwari, why is it that this one scheme, whether it is in Madhya Pradesh or in Maharashtra or now in Jharkhand, a cash transfer into the account of women is tracking as, because the other schemes, the government can build a house for you, the government can build roads, they give you free food grains, there's so many other benefits you get from government. Why does this one scheme rank so far above everything else? Because it's a direct cash transfer scheme, it results in an immediate beneficiary status. Let's say you're an Ayushman scheme, you have enrolled as a beneficiary, but you're just a card holder. You will become a beneficiary when you actually go and use that card when you unfortunately get sick. In a cash transfer scheme, there is no leakage. In other schemes of the government where it is building houses, roads, etc., there is significant leakage because corruption is also one of the big issues there. And also,
it signals women empowerment, because Jharkhand, if you see, it has 24 districts. Almost all the districts of Jharkhand are in the most backward list of India. Its per capita income is almost half of national income. So there is a lot of rural agri distress, and this helps people alleviate their concerns regarding the high prices of essential commodities, etc. Also, if you see, this has been done not very early compared to Maharashtra. This has been done in the last 2 to 3 months, whereas the Maharashtra scheme is there for, I think, 5 to 6 months now. It is a late realization because the government has not fulfilled the unemployment allowance promise and the stove allowance promise which it had given in 2019. Okay, let Gurami respond to this, that the unemployment promise, the stove promise, ये बीजेपी गिना रही है कि जो आपने वायदे किए थे पिछले चुनाव के टाइम पे वो तो आप पूरे कर नहीं पाए, तो आपकी गारंटीज को कैसे कोई सीरियसली ले सकता है? नहीं, ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे, मैंने जो 2 एरियाज आपको बताए कि कोविड का भी मामला रहा और फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी यहां पर क्रिएट करने की कोशिश की गई, उसके बावजूद भी फिलहाल जो हमारी एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में जितना फास्ट ट्रैक पर इस सरकार ने काम किया है, मुझे नहीं लगता कि देश के किसी और स्टेट ने ऐसा किया होगा। पिछले 1 साल से कंटिन्यूअसली जो वैकेंसीज थी उनको फास्ट ट्रैक पर एजुकेटेड यूथ्स को दिए गए और कंटिन्यूअसली जगह खाली भी हो रही है और भरी भी जा रही है। ऐसा नहीं कि नहीं किया। हाँ, एक एरिया और बेहतर हो सकता था अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जो झारखंड का रॉयल्टी का पैसा उनके पास डिपॉजिट है, जिसको लेकर झारखंड सरकार कंटिन्यूअसली उनको अपील पर अपील कर रही है कि हमें वो 1,36,000 करोड़ जो स्टेट गवर्नमेंट का ड्यू है वो हमें दीजिए, शायद कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ और जॉब क्रिएटेड वाली एरियाज को काम किया गया होता। जो झारखंड का हक है वही नहीं दे रहे हैं। आई एम जॉइंड बाय सुप्रीमो भट्टाचार्य, जनरल सेक्रेटरी स्पोक्सपर्सन झारखंड मुक्ति मोर्चा। हम अभी बीजेपी के संजय सेठ से बात कर रहे थे। बीजेपी के नेता काफी कॉन्फिडेंट साउंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि इतनी एंटी इनकम्बेंसी आपकी सरकार के खिलाफ बन चुकी है कि बीजेपी एक बार फिर से रांची में सत्ता में आने वाली है। आप बताइए ना, हमारा झारखंड कहीं से भी इंटरनेशनल बॉर्डर तो शेयर करता नहीं, और 2014 से 2024 तक केंद्र में जो भाजपा की सरकार रही, तो 2014 से 24 के लोकसभा चुनाव के पहले तक कहीं कोई घुसपैठ नहीं था। अचानक से ये 2024 के पार्लियामेंट के इलेक्शन के पहले से कहां से घुसपैठी आ गया, कहां से पैराड्रॉपिंग हुआ? तो ये कोई इशू ही नहीं है। घुसपैठ एक्चुअली भाजपा के अंदर हुआ है। जिस प्रकार से अन्य दलों के नेताओं को लोकसभा के पहले लाया गया, पार्टियों को तोड़ा गया, घरों को तोड़ा गया, उसके बाद ये जो घुसपैठी जब भाजपा के अंदर ही ये इस बात की मरमरिंग शुरू हुई कि असली भाजपा कहाँ है, तो इसको इन्होंने सार्वजनिक किया कि नहीं ये मुसलमान है। अरे कोई गृह मंत्री और प्रधानमंत्री मुसलमान शब्द का यूज करता है क्या चुनाव प्रचार? नहीं, पर जो हो रहा है ट्राइबल वोट है झारखंड का वो बहुत अहम है। बार बार बीजेपी कह रही कि डेमोग्राफी बदल रही है। 51 के सर्वे में शेड्यूल्ड ट्राइब्स करीब 35% थे, गिरते गिरते वो 2011 में 26% पे आ जाता है। वो कह रहे हैं कि घुसपैठिए आ रहे हैं और जो लोकल पॉपुलेशन है, खासतौर से जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, वो कम हो रही है। भैया मेरे, आपको थोड़ी सी भी जानकारी हो कि 1951 की जो बात कर रहे हैं, 1952 से यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ जो अभी तक जारी है। तो इसलिए यहाँ पर बाहर से बहुत सारे लोग आए। 52 से लेकर अभी तक 2000 के बनने के बाद जब राज्य अलग हुआ, तो ये तो बाहर से लोग जो आ रहे हैं तो उनकी संख्या बढ़ ही जाएगी। उसमें हिंदू और मुसलमान का कहाँ शब्द है? तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो डेमोग्राफी का चेंज हो रहा है वो तो राजधानी रांची का भी चेंज हुआ है। पहले 51 में जो हमारा मेन रोड भी था वो भी पक्का नहीं था, जो महात्मा गांधी रोड है वो भी लाल मोहरम का रोड था। मैं चूंकि जन्मा नहीं था, मैं सुना हूँ और जो ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें देखा हूँ।
तो इसलिए इस तरह से बातें करना बेवकूफी है। बीजेपी बहुत सीरियस चार्जेस लगा रही है आपकी सरकार पे करप्शन के, गवर्नेंस फेलियर्स के। आपके मुख्यमंत्री जेल जाते हैं ईडी के केस में, उनके इर्द गिर्द लोगों पे छापे पड़ते हैं, कैश निकलता है, कई सारी गड्डियां कैश की भरी हुई। ये कह रहे हैं कि देखिए लूट मची हुई है झारखंड में आपके राज्य में। भैया मेरे वहां पर करप्शन के चार्जेस है, एक भी प्रूव्ड नहीं है, लेकिन जो संपत्तियां जब्त हुई महाराष्ट्र में अजित पवार की, नारायण राणे की, आपके छगन भुजबल की, आप उनको उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं। जिसके ऊपर में आपने चार्जशीट लाया है हेमंत विश्व शर्मा को, उसको आपने मुख्यमंत्री बनाया, यहाँ का सह प्रभारी बनाया। और हमारे मुख्यमंत्री को जब बेल हुआ तो हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन यदि आप पढ़ लेंगे तो आपको लग जाएगा कि ये छल प्रपंच और पूरा का पूरा एक षड्यंत्र था जिसका खुलासा हाईकोर्ट ने किया। इसलिए बहुत साफ शब्दों में कह सकता हूं कि झारखंड में इससे इसका इतना गहरा लोगों को धक्का लगा है। चंपाई सोरेन के दल बदलने को आप कैसे देखते हैं? बीजेपी को खासी उम्मीद है कि कोल्हान इलाके में, चूंकि वो टाइगर ऑफ कोल्हान के नाम से जाते हैं, उनका दबदबा है और हमने देखा भी कि खासतौर से उस इलाके में उनकी लोकप्रियता भी काफी ज्यादा है और इनकी मौजूदगी से बीजेपी को लगता है कुछ वोट पड़ेंगे कोल्हान में। मैं तो कहूंगा चंपैदा को कि चंपैदा जब तक हमारे साथ रहे, चंपैदा कोल्हान के टाइगर हो गए। लेकिन आपको मैं बता दूं, उनका जो अभी वो भी चुनाव लड़ रहे हैं 2 जगहों पर, एक वो है उनका पुत्र, आप देख लेंगे 23 तारीख को नतीजा आने दीजिए, वो दोनों सीट भी भाजपा गवाएगी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के झोले भी जाएगा। बीजेपी इस तरह के स्लोगन लेके आई है, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और ये माना जा रहा है कि इस तरह से स्लोगन से कंसोलिडेशन हो सकता है हिंदू कम्युनिटी के बीच में। अगर हिंदू एक हो गए तो फिर जो पूरा आपका कास्ट अरिथमेटिक है, कास्ट गणित है, जातीय गणित, वो फेल हो सकता है कंसोलिडेशन के सामने। देखिए, बटेंगे से बढ़ता है, कटेंगे नहीं होता है। और एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, वो तो सही बात है ना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, तो एक है, इसलिए सबको ही हम लोग सेफ है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सुप्रिया भट्टाचार्य, General Secretary, spokesperson of the Jharkhand Mukti Morcha, for joining us on this broadcast. Thank you very much. Now I want to go back to Yashwant Deshmukh and Amitabh Tiwari, and there are 3 data sets which break down the different regions of Jharkhand and give you a sense of how tight the battle is going to be. We're looking at recent data for reference to give you a breakup of how these alliances are stacked. Now when it comes to seats, if I convert the Lok Sabha leads into assembly segments, the India Alliance led in 10 of the 18 seats in Santhal Pargana. The NDA had 8. In the 25 seats of North Chota Nagpur, the NDA dominated with 24. In South Chota Nagpur, the India Alliance did really well, 11. In Kolhan, this is, remember, Lok Sabha, 8 for the NDA, 6 for the India Alliance. In Palamu, the NDA did really well with 8 versus just 1. So Amitabh Tiwari, broadly, the BJP will hope to score big in North Chota Nagpur, Palamu, which are their base areas, and do better in Kolhan and in South Chota Nagpur, where the India Alliance did better in the Lok Sabha elections. That's really how this breaks up region-wise. Yeah, essentially the North Chota Nagpur has been a stronghold of the BJP because it is the hub of outsiders, let's say. The Biharis reside here, and out of these 25 seats, there is not a single ST reserved seat. That's why you see the BJP doing well here. What we are also seeing is that because of the inclusion of Champai Soren, it is doing better in Kolhan than the India bloc. However, South Chota Nagpur, which again houses Ranchi and is a hub of ST reserve seats, and Santhal Pargana is where it was lacking. In Palamu, again, because it shares borders with Bihar, it again has been doing fairly well because RJD is there, the competitor from the India bloc side. However, these are Lok Sabha estimates. When elections become highly localized seat by seat like Maharashtra, it is a similar case like Maharashtra because you have 15 candidates per seat.
both the alliances have grown in strength compared to 2019. Ajsu factor will play a role in Kolhan and South Chota Nagpur, where there is a bit of a Kurmi population. However, you also have a new party, Jairam Mahato, who is emerging as a new Kurmi leader. His party damaged India bloc in 3 Lok Sabha seats in 2024 elections because they split the opposition vote. However, if they do well here, theoretically they could split the opposition vote or the anti-JMM bloc. So we don't know how this bullet will fire. I want to look at the same regions now when we break this up as per votes. You saw seats earlier. I'll now show you votes. In Santhal Pargana, the BJP had 36% of the votes, the India Alliance about 40% of the votes. In Chota Nagpur, the BJP had 32%, the JMM 31%, others 37%. Chota Nagpur, BJP had 37%, South 38% for the JMM and the Congress and the RJD. In Kolhan, 29% for the BJP versus 49%. These are from the last assembly elections. In Palamu, 37% for the BJP and 30% for the JMM Congress RJD. Broadly, Yashwant Deshmukh, if one looks at this data, the BJP has to break into the JMM Congress domination in Kolhan, which is where they think Champai Soren can have a role to play. The BJP has to continue to do well in South Chota Nagpur, and the BJP has to ensure that there isn't a complete tribal consolidation against the BJP. Like they ensured that in Haryana there wasn't a Dalit consolidation against the BJP, they have to ensure that there isn't a complete tribal consolidation against the BJP in Jharkhand. Amitabh. Yashwant. Rahul, I think one thing, a couple of things we have to take it upfront, like for example, sending Hemant Soren to jail has backfired. And we could see even in the Lok Sabha elections, all the 5 tribal belt Lok Sabha seats were swept by the opposition alliance candidates. Even from these numbers, you can very well sense that be it Santhal Pargana, be it Kolhan, or be it South Chota Nagpur, I mean basically the tribal area belt, that is where Hemant Soren has held. And he may be facing a significant anti-incumbency in rest of the regions. But I mean, credit where due, I think he has come across as one of those next generation leaders within the opposition alliance who has taken his father's legacy to the next level, and that's a big thing because Shibu Soren, by and large, is a kind of he's a legend in himself as far as the tribal leadership is considered. But Hemant Soren taking his father's legacy to next level itself is a big achievement. Well, he now is starting to look a bit like Shibu Soren as well. So he has that whole dadi and that kind of look, which is what was so typical to Shibu Soren. Baba wala look, unhone Dasham Guru ka le liya hai ek tarah se. He is also targeting that. Somehow I believe that BJP may have a better advantage in terms of momentum of anti-incumbency. I understand that. I am still not convinced for them not fully going with the face of Babulal Marandi. Babulal Marandi, by and large, for the last 20-25 years, has been the most popular face in Jharkhand, even when he was outside the BJP. So something tells me that, I don't know, there must be some strategy to their combined leadership. But as Amitabh would also probably underline you, that rest of the BJP leaders, leadership, barring the newly brought in Champai Soren, have been more of a liability rather than an asset to the BJP's game plan, apart from the Babulal Marandi. Okay, Amitabh Tiwari, Yashwant Deshmukh for joining us. Thank you very much. Do watch our coverage all through the day on the day of polling from Jharkhand, and then our coverage from the battlefield of Maharashtra continues as well.